सह प्रायोजक टाइनी और लक्ष लक्ष लाइक केवल 15 टंका रे एक्सपर्ट भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया रहो एवरग्रीन मधुकुंज 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 In the presence of many of our distinguished colleagues here, Aparajita Sarangi ji was there as well, I think. Our Honorable Bhubaneswar MP, Shri Shah very graciously said that it is without doubt that Mr. Naveen Patnaik is India's most popular Chief Minister. These were Mr. Amit Shah's own words. And he also praised Mr. Patnaik for the cooperative federalism and the constructive cooperation with the centre that he has demonstrated in his last 24 years as Chief Minister. He doesn't believe in needlessly picking quarrels with the central government. It doesn't pay. We are a regional party. In the kind of fiscal architecture our constitution has provided, it is impossible to continuously bicker and fight with the central government and survive as a model fiscal state as Odisha is today. Particularly if you are needlessly, constantly heckling the central government, because that doesn't obtain to the interest of the people of the state. This is Mr. Patnaik's firm view. He believes that, yes, party politics has its place, there is no question. And that's why I said the other day when I was speaking on the Delhi bill, the BJP is our principal opposition party in the state and we fight them tooth and nail when elections are concerned. But once elections are over, then that should be the end of party politics. Then governance kicks in. And for governance to kick in, you have to rise above partisan party politics and work in partnership with constructive cooperation in a federal structure. That's what Mr. Patnaik has always believed in, and that's what Amit Shah ji, in fact, said, that this is the reason that I appreciate Mr. Patnaik's role as Chief Minister. I cannot support a no confidence motion against a central government today, even though we are against the BJP as a political party. But a central government which may not have given us our entire wish list. No central government ever can give every state government's entire wish list. I recognize that fact. There are fiscal constraints where resources are in short supply, and therefore it's not possible for every central government to give in to every state government demand. But in terms of rise in coal production, in terms of mineral royalty revision, which has long been Odisha's just demand, in terms of the removal of an export tax on iron ore and manganese ore, which was vital for Odisha's fiscal management. In terms of, the other day there was a bill for exploration of offshore minerals, which has long been our demand. In terms of, in my constituency, a Puri International Airport, which has again long been a dream of the people of Puri. Now that is well underway. Yesterday, Mr. Sindhya very kindly said in the House that it is virtually in the last stages of completion of plans, and therefore construction should start very soon. In terms of the Puri Heritage, Jagannath Puri Heritage Corridor, which was opposed by some of my distinguished colleagues, I shall not name them, but which the central government ensured the ASI gave permission for it. So I am grateful therefore for many things that the central government has done for Odisha, which is why in any case I am unable to persuade myself on behalf of my party and my leader to support a no confidence motion today, which has been brought by the Congress party. Let me now come to the merits of this particular no confidence motion that they have allegedly brought on one count alone, that is to bring the Prime Minister to the House. That seems to be the reason why this no confidence has been moved, that the Prime Minister should be brought to this House. He is avoiding the House and avoiding speaking on Manipur. Mr. Chairman, I have always believed that the Congress party is adept at snatching defeat from the jaws of victory. They are also very adept at cutting their nose to spite their face. And I say this advisedly. They know every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, and I think his worst political adversaries will recognize the fact that he is a peerless orator. There is no question. I don't think there is an orator today in India who matches him. There is no question. Everybody recognizes that fact.
So every time he gets up on the floor of the House, he pushes the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the House and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. So this defies common sense, it defies logic, it defies political sense. I believe that there are other arguments that would have been more persuasive. The people of this country will decide if the Prime Minister has chosen not to speak, whether that was right or that was wrong. It's for the people to decide, and you have to take that case to the people. You don't bring a no confidence which is doomed to fail in any case. At the threshold, you know your no confidence is doomed to fail. You don't bring it needlessly and waste the time of the House. You don't disrupt the House needlessly when you know that the ruling party likes nothing better than the House being disrupted so that bills can be passed in the din. So ministers are happy not to answer any questions in question hour. This is, for every ruling party, this is a dream scenario. They let the opposition disrupt parliament so that we can go home and sleep happily. So therefore, this kind of disruptive politics has not paid dividend in the past, and I have no doubt that this kind of disruptive politics will not pay dividend in the future. As far as Manipur is concerned, I have to say that the Honorable Home Minister had called an all-party meeting. I was one of the members who was present there on behalf of my party. It was an exceptionally detailed analysis which was given to everybody. The Congress party was represented there by Shri Ibobi Singh, the three-term former Chief Minister. All the other parties were there, and we were given a complete kaleidoscope, really, of what has gone wrong in Manipur. And these are legacy issues. Manipur is not the result, today's conflagration in Manipur is not the result of the last 10 years, let's face it. It's the result of almost 50 to 60 years of strife in Manipur. The fact of the matter is that this entire issue has boiled over, not now, it has boiled over 3 or 4 times in a major way through the 80s and the 90s. This was somehow capped until, very unfortunately, the Manipur High Court in a PIL suddenly woke up one fine morning. In a 20-minute hearing without pleadings being completed, the High Court passed what according to me is one of the most ill-advised orders that this country has ever seen, of giving a direction to the state government to immediately consider within 4 weeks the giving of ST status to a particular community. Firstly, this is totally without jurisdiction because the state government can't do it. It's something only the central government can do. So the High Court not only passed a totally erroneous order, but passed an order without hearing all the parties, without affidavits being completed, without any kind of rationale or logic. It simply passed an order which the Supreme Court severely deprecated. The Chief Justice's Court on 19th of May severely deprecated the High Court order. But I believe the central government missed a trick there. I believe the central government, in asking for the matter to be remanded back to the High Court to be heard there, was a huge error. And I pointed this out at the meeting, that the central government should have been happy to let the matter rest in the Supreme Court's lap. Because we have seen that the people of this country have great faith in the Supreme Court. Look at the classic case of Babri Masjid Ram Janmabhoomi dispute. For decades, this dispute could not be resolved until the Supreme Court sat down, gave a judgment, and both parties accepted it graciously. So I believe that if this issue had been left to the Supreme Court, tempers would have cooled. Instead, the matter went back to the High Court, and the High Court, again in a totally ill-advised order, instead of cancelling the last order, simply revised the order and said, all right, instead of 4 weeks, you take 1 year to decide this matter. Which means the sword of Damocles, therefore, kept hanging, and this is what has constantly created the kind of friction that we have seen. Mr. Chairman, I have to say that what has happened in Manipur today is, as Mr. Patnaik says, heart-rending. And he has asked me to, in fact, mention in the all-party meeting and to speak today and say that all parties must speak in one voice. What this parliament cannot afford is a no-confidence motion against the central government, because every political party must give their constructive suggestion at the moment to say what is possible, what can be done,
because you are really trying to fit a square peg in a round hole there. That's the problem today. So therefore, you have to give constructive suggestions rather than blaming the central government for what is clearly a legacy issue running back several decades. There is no question that blame has to be apportioned to the state government. Every right-thinking person has said so. Every right-thinking person has said that the Chief Minister ought to have conducted his politics and his policies on the basis of Raj Dharma, which perhaps has been lacking there. There is no doubt about it. But I don't know whether the central government would have been better advised to have brought in President's rule, because clearly there was no alternative to this Chief Minister. Therefore, if the President's rule had to be imposed there, I'm not sure that that in this country has ever worked satisfactorily in other states as well. So it is really a Hobson's choice and that the central government was confronted with. And that is something that I think all political parties honestly should have considered and should have felt, therefore, that the need of the hour is to speak in one voice and not to speak in a fractious tone. And I'm going to conclude in a short while. The heart-rending scenes that we have seen with regard to the atrocities on women in Manipur is not new to us. This is seen everywhere in the world where there is strife, where there is this kind of conflict, where there is this sort of internecine warfare. We have seen this in sub-Saharan African nations, in Burundi, between the Hutus and the Tutsis. We've seen this in Rwanda, for instance. We've seen this in Bosnia-Herzegovina. We've seen this in Serbia. So this is endemic, unfortunately, to our society and our polity. And therefore, I come to this one seminal issue, that the way forward for women's empowerment is again what Mr. Naveen Patnaik has been repeatedly requesting the central government to bring in the women's reservation bill. And I think that is one area where the central government will be seriously remiss if in the 17th Lok Sabha they don't do it, because there is a full majority. In fact, there is near unanimity. Today, all shades of political opinion in this house and the upper house are of the same opinion, that there should be women's reservation in the state assemblies as well as in central parliament. Because that is the kind of empowerment we need for women on the ground level, at the cutting edge level, at the grassroots level, to feel empowered, to feel that they have an equal stake in society, and for men to therefore feel that, look, they are now our equals, they are in as powerful position as we are, so therefore we should treat them at par. So, Mr. Chairman, this is something that I would seriously on this occasion, if there is anything on which I feel that this government, I think, lacks the confidence of this House, quite frankly, is that they have not brought, despite being fully empowered to do so, the Women's Reservation Bill so far. We have now only one more session of Parliament after this, which is the winter session. I certainly plead and urge the Prime Minister that he should bring in the Women's Reservation Bill, have it passed unanimously. It can be done in 15 minutes in the lower house and the upper house. Parliamentary Affairs Minister is here. I have requested him personally many times also. But they're saying that it is lapsed now. Because I know it should not. I don't know, I was told. But in any case, so that is one of the things that we need to seriously consider. Now, therefore, for a number of compelling reasons that I have mentioned, we are completely unable to persuade ourselves on behalf of the Biju Janata Dal and Mr. Naveen Patnaik to support this no confidence motion. I have no doubt that it will be resoundingly defeated and it will be rejected as it ought to. And unfortunately, I think it will not at all benefit the Congress party to have brought this no confidence at this point. Thank you very much, Mr. Chairman. तेज लोकसभा मणिपुर संपर्कित अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना चली बीजेडी पक्षर वितर्क भाग नहीं बीजेडी संसदीय नेता पिनाकी मिश्र निज दलर स्टाण्ड रखुले अनास्था प्रस्ताव को बीजेडी विरोध करिबो बोली पूर्वरु स्पष्ट करितला। आपण जानिछंती दिल्ली प्रशासनिक सेवा अध्यादेश बिल 2023 वितर्क भी सांसद बा संसदीय नेता पिनाकी मिश्र भाग नहीं एवं निज दलर निज पार्टीर स्टाण्ड क्लियर करथिले। समय होइछ एक छोट ब्रेक रो, खूब शीघ्र फेरुछु।
तीन चार पियो एवरग्रीन रहो एवरग्रीन। Why should I hire you? सर मु कौनसी भी प्रेशर हैंडल करि परिबी। मु बॉडी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैंडल तो यांकर कुंडई हेबार प्रेशर भी हुए नहीं कामर प्रेशर तो दूरर कथा बट डोंट वरी नुआ डिक्सी स्कॉट जहार फ्रेश टेक फैब्रिक दिया आपण को चमत्कार फ्रेशनेस एंड कंफर्ट छाई गला डिक्सी स्कॉट। ओजन बढ़ाइबार उपदेश सुनिबि कहारो उपदेश प्रचुर खाओ स्ट्रेस कम नियो भल कि सुओ सब करिली एबे नो उपदेश केवल एक्सपोर्ट आपणांतु एंडियोरामास ये 6 सप्ताह रे ओजन बढ़ाइबा आरंभ करे। एंडियोरामास ओजन बढ़ाइबार एक्सपर्ट। All-new TVS Apache RTR 164V Special Edition. Unstoppable, unskippable. टोमेटो सॉस र शुद्धता प्राइम र विश्वसनीयता प्राइम स्वाद विश्वास। रूम नंबर 205 रे मृत्यु रहस्य। दर्शक बंधु भुवनेश्वर कटक रोड रे थिबा दीपाली बार लॉज रो 205 नंबर रूम को सील करिछि पुलिस। दीपाली बार बंद करी मैनेजर फरार रहिछि। सामना को आसीछि शुभलक्ष्मी को शेष रील्स वीडियो। आज जेरा हेबो जणे परे जणे लोक जरा होउचंती। शुभलक्ष्मी को पुरुष बंधु अनिल को आज जेरा करा जिवो। दीपाली बार रे शुभलक्ष्मी साहू डेथ सस्पेंस उपरु केबे हटिबो परदा। दिन बीतवा सहित रहस्य बढ़ुची। सामना को आसुची नुआ नुआ तथ्य। शुभलक्ष्मी प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु सांघातिक सत तथ्य मिली जो उल्लेख अच्छी मृत्यु पूर्व निशा सेवन करथिले शुभलक्ष्मी। तांको मृतदेहरु निशा द्रव्यर नमूना भी मिलिथिबा कुहा जाउची। तेबे यह निशा द्रव्य ना विष ता स्पष्ट होई नाही। मृत्युर 4 रु 6 घंटा पूर्व निशा सेवन करिथिबा सूचना मिली। एथिपाई स्टेट फोरेंसिक लैब को पठा जाइछि शुभलक्ष्मी भिसेरा नमूना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तेबे की एवं काहेकि निशा देइथिला सेनी तदंत चलिछि। एपरि शुभलक्ष्मी बॉयफ्रेंड स्पष्ट करिसेंती जे 10 रु 20 दिन हेबो से शुभलक्ष्मी सहित जोगाजोग करू नथिले किंतु जणे व्यक्ति को वर्तमान संदेह करा जाउछि एवं एकथा शुभलक्ष्मी पूर्वतन जो पुरुष बंधु अछंती तांको ना नैथिले से होउचंती आलोक जहां को पुणी थरे डका जीव पचरा उचरा करा जीव ए पूरा घटनारू सस्पेंस बा रहस्य को भेद करबा पई ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा अधिक सूचना पई स्निग्ध चंदन दास आम भुवनेश्वर रिपोर्टर जोड़ी होइचंती। स्निग्ध अनेक सांघातिक तथ्य सामना को आसुची। प्रकृति रे रूम नंबर 205 रे से दिन कोन घटिथिला ताकू ने बारंबार गोटे मन भितरे प्रश्न तैयारी होउची जे किए प्रकृति रे विष देई देला ना निशा सेवन करिकी कि हत्या करिछि। यहाकू नेकी मध्य अनेक दिग सामना को आसुछि। आउ कहा कहा को जेरा करा जाई पारे पुलिस पक्षरु स्निग्ध। निश्चित भाव में आपड़ जानी प्रवीण जो दीपाली बार लॉज रो 205 नंबर रूम रु जो शुभलक्ष्मी साहूंकर जो भाव में झुलंता अवस्था मृतदेह मिलता तेज पुलिस विभिन्न दिग को लेकिन तदंत आरंभ कर जहाँ सूचना रही कि 205 नंबर रूम रे लक्ष्मीसागर थाना पुलिस सील करी। परवर्ती समय दीपाली बार को ताला पकई मैनेजर एवं फेरार अच्छी पुलिस विभिन्न प्रकार नोटिस करथिला जे कि थाना रे पुणी थरे हाजर होई कि तांकर बयान देबा पई किंतु जेहेतु से फेरार अछंती निश्चित भाव पुलिस आउ थरे नोटिस करिवो अपेक्षा करिवो जदि से थाना रे हाजर न होंती हुए तो आवश्यक पड़िले तांको मध्ये गिरफ करा जाई पारे। किंतु आपण जानिथिबे जे कि आज प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस हाथ रे लागिछि जो रिपोर्ट रु जना पड़िछि कि जे मृत्युर 4 रु 6 घंटा पूर्व से निशा सेवन करिथिले तेबे निशा से निजे खाइथिले ना तांको किए निशा जोर जबरदस्त देइथिला ए दिगो को नै कि निश्चित भाव परवर्ती समय स्पष्ट होबो जेतेबेले भिसेरा रिपोर्ट पुलिस हाथ रे लागिवो। जेहेतु प्राथमिक रिपोर्ट रु पुलिस यह स्पष्ट होई सारिछि जे जो हैंगिंग सुइसाइड बोली जहाँ स्पष्ट होई सारिछि किंतु परवर्ती समय तांकर परिवार लोके जोड़े हत्या अभियोग आणुचंती से हत्या अभियोग को आधार करके पुलिस विभिन्न दिग को लेकिन तदंत करथिला। गतकाली आपण जानिथिबे तांकर जे पुरुष बंधु थिले संजय तांको जेतेबेले पुलिस पचरा उचरा करथिला माराथन जेरा करथिला निश्चित भाव से एक आउ जने युवकक
ना सामना को आनी से कहवा कथा जे मृत्युर 20 दिन पूर्व से शुभलक्ष्मी सहित ब्रेकअप होता यार भितर मृत्युर 3 दिन पूर्व से अनिल नामक जड़े युवक पाखरे थे तेरे जहाँ सूचना दी अनिल किए से शुभलक्ष्मी को करेक्शन करदेवी आलोक नुहे अनिल जहाँ ना एठी शुभलक्ष्मी पूर्वर बंधु बा आगुरु जे तांको सहित कंटाक्ट थिले संजय जहाँ ना कहुच्छी से कहते अनिल का ना किंतु अनिल एबे कोठी स्निग्ध ये प्रश्न मन भीतर को आसुची केते शीघ्र अनिल को डाकी जेरा करा जिबा बा पचरा उचरा करा जिबा जरूरी हो पड़ी वर्तमान पूरा केस रे कारण ये पूरा घटना रे अनिल होउचंती वर्तमान रो आउ जने बड़ संदिग्ध निश्चित भाव में जेहेतु तांकर पुरुष बंधु जे रहिसंती संजय जेहेतु अनिल को ना सामना को आनी तेज पुलिस अनिल को डाकी खूब शीघ्र पचरा उचरा कर नोटिस सहित से आज जहाँ सूचना रही जहाँ थाना अधिकारी कहते कि आज से थाना हाजर हो पारती बयान रेकर्ड हो पारे सहित जो भाव में से जो लज रे जो भाव में झुलंत अवस्था मृतदेह मिलता शुभलक्ष्मी से से जो लज को किए डाकी शुभलक्ष्मी निजे जाइए ना किए डाकी ना अनिल डाकी ना संजय डाकी ये दिग को लेकिन पुलिस परवर्ती समय स्पष्ट कर एपटे जेहेतु विभिन्न दिग को लेकिन 12 जनकर बयान रेकर्ड संजय को लेकिन पूर्व संदेह होता समस्त किंतु संजय समस्त सामना को आसी निजर स्टांड रखी प्रतिक्रिया रखी पूरा घटना रे तांकर कौनसी संपृक्ति नाही बोली कही अनिल को ना को नहीं बहुत अधिक चर्चा होची अनिल एबे कोठी अनिल को खूब शीघ्र डाकी केमिति पुलिस पचरा उचरा करिवो अनिल ठारू कौन सांघातिक सत तथ्य सामना को आसुची कौन 205 रूम रे से दिन घटी किए तांकु शुभलक्ष्मी को निशा देइथिला ये तमाम प्रश्न ऊपर हुए तो परदा हटी जीव आशा करा जाई पारे आगामी किछि दिन भितर आपन को धन्यवाद स्निग्ध अधिक सूचना अधिक आलोचना पई स्निग्ध चंदन दास आम भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होइथिले पुलिस को ठकिले नकली पुलिस ठकई गैंग्र शिकार हेले 2 पुलिस कर्मचारी स्पेशल पुलिस रो परिचय देई नकली पुलिस असली पुलिस को ठकुले चून लगाउले ठकई शिकार होइचंती 6th बाटालियन सिपाही मानस कुमार बारिक और सरोज कुमार पंडा सेमानक ठारू 9,80,000 टंकार ठकी नहीं टंका बदल में कागज बिड़ा फेराई अभियुक्त मुख्य अभियुक्त सरोजकांत जेना समेत 4 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि पुलिस सुना अलंकार सहित 1,30,000 टंका जबत होइछि पूर्व ढेंकानाल सुंदरगढ़ भुवनेश्वर कटक आदि अंचल ठकई करिथिबा कटक अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र सूचना दैछन्ति आमे जानिया को पाइलु जे जो 4 जन अक्यूज जो माने कि जणे हेले मने करंतु एटू अलियास मनोज पटनायक तापरे सरोज अलियास सरोजकांत जेना राजेश कुमार खुंटिया एवं सुशांत कुमार सेठी ये 4 जन जाक एमती विभिन्न लोक खाली आम एरिया नुह अन्य जगार लोक ठकिचंती जमती कि ढेंकानाल नयापल्ली पहाड़ आपणकर जो सुंदरगढ़ ये सब जगार विभिन्न लोक लक्ष लक्ष टंका एमती प्रतिश्रुति देकी ठकिकी तांकटू नहीं जाइछंती जय महांती आम कटक रिपोर्टर जोड़ी होती अधिक सूचना देवाई जय असली पुलिस को यही नकली ठक बा नकली जो पुलिस अच्छी जो माने ठक अच्छी एमाने केमिति चून लगाउथिले केमिति ठकुथिले एमाने चून लगेबार तरीका केमिति थिला देखो क्या भी आप ठकवा चेष्टा करेंगे सब भल बाट हूँ सहित संपर्क बढ़ेगा बंधुता स्थापन करवा जीवा आसवा सहित अधिक परिमाण पाखक जीवा आसवा बढ़ेगा ये हूँ गोटे बाट प्रथम विश्वास आपन को जितवा हुए जितवा पर आपणकर जो मंद उद्देश्य रही से सफल निश्चित भाव में हो पारे जदि क्या ठकिया चाहिए से ही घटना होती 2 जन जो मैंने ठकामी शिकार होती हूँ ओएमपी 6th बाटालियन 2 जन सिपाही पुलिस विभाग में काम कर कर्मचारी एवं यही जो गैंग अच्छी यहाँ पूरा गोटे सुचिंतित योजना मैंने ऑपरेट करते कटक सुंदरगढ़ ढेंकानाल भुवनेश्वर पहाड़ थाना भी एम ना मामला रही खोर्धा जिले में भी यही भाव में ठकुंट लोक से बंधुता स्थापन करने पर यही 2 जन सिपाही को कहते आपड़ किसी टंका दिंतु एवं आम आपको 20% एक्सट्रा देवु जहाँ आपंकर प्रिंसिपल अमाउंट रही मूल राशि को छाड़ी आम आपको 20% अधिक टंका देवु आम अनुमान करुचु निश्चित भाव में पूर्वर से किसी अमाउंट एमती अधिक देते जहाँफल कि 9,80,000 टंका देवाक उचित मन कले से 2 जन पुलिस कर्मचारी एत शिक्षित हो पुलिस विभाग में काम करियो से कथार पर्दा बर्तमान पूर्वर कौन प्रकार अधिक छोट छोट अमाउंट देकी अधिक टंका पाई कि ना तेबे
9,80,000 टंका जो मेरीटाइम म्यूजियम अच्छी नौ वाणिज्य संग्रहालय सेठी एमाने कलेक्ट करिसेंती ए दुई जन व्यक्तिଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସରୋଜକାନ୍ତ ସେठी जे मास्टरमाइंड मुख्य अभियुक्त रहिसेंती ताଙ୍କ सहित तार आउ 3 जन सहयोगी रहिसेंती एमाने से टंका को नैचंती ଏବଂ किछि दिन ପରେ पूरा समान ढंग रे जेमती नोट रो लेंथ आउ ब्रेड्थ जेमती थाए से आकार से माने कागज गुड़ा सब काटिकी गोटे बैग रे पैक करिकी पुणी एमानकु फेरिचंती जेतेबेले एमाने जानिबा को पाइचंती आमे गोटे भयंकर ठकामीर शिकार हेइछु गोटे बड़ ठकेई रो शिकार आमे हेइछु से माने आसी मंगलबाग थाना रे अभियोग करिचंती पुलिस इन्वेस्टिगेशन कला एवं जानिबा को पाइला ए गैंग गोटे जेमती ऑपरेट करूची जे कि अधिक टंका जय एक बड़ बार्ता साधारण लोकंक पाखकु जीव कि जो जगह पुलिस एठी ठकेईर शिकार होउचंती सेही जगह साधारण लोक केमिति वर्ती पारिबे केते चतुरतार सहित ए ठक माने पुलिस को चून लगाउथिले ताहा सामना को आसीछि किंतु जदि साधारण लोक ए क्षेत्र में रही थांते आमे कही थांते जे साधारण लोकंकु चून लगे पळे गले किंतु एमानकर चतुरता को देखंतु एमाने चतुरतार सहित पुलिस को भी चून लगाइबाकू पछिला नाही एवं सफल हेले किंतु शेषरे धरा पड़ी गले। देखु एमानकर सबुठ बड़ कथा हूँ अपराधी माने ठक माने साहस करुचंती आमे पृथ्वी रे काहाकू भी आमर टार्गेट को आनी पारिबु तांको आमे ठकामीर तांको ठकी पारिबु एवं शेष में सेया ही हेछि देखंतु दुई जन पुलिस को सेमाने ठकी गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि करिसंती एवं साधारण जनतांकर अवस्था कौन हम आपण बुझंतु एवं प्रथम कथा हूँ गोटे कॉमन मैन हो बा जने पुलिस कर्मचारी हूँ प्रथम ये लोभ मनुष्य को खाई दिए कम देकी अधिक पाइबार आशा मनुष्य को बर्बाद कर दिए तली तलांता कर दिए से अवस्था ही होइछि एवं नकली ठक गुड़िक ए नकली पुलिस गुड़िक प्रकृत शत शतका ठक एवं एमाने बारंबार ठकुथिले जहाँ अभ्यासगत ठकामी बोली जना पड़ुछि किंतु पुलिस आगरे एमाने पुलिस बोली परिचय देले एवं पूरा ठकेई कले ए कथा को तो होय तो पुलिस संदेह करि थांता जो पुलिस बाबू माने बा कर्मचारी माने ए पूरा ठकामीर शिकार होइछन्ती से माने अंततः टिके संदेह जदि करि थांती से माने ठकामीर शिकार हि न थांती। निश्चित भाव में देखो आप जहाँ कहते मुझे संपूर्ण एकमत जदि प्राथमिक पर्यायर एमाने टिके भी संदेह करिथांते हुए तो एमान कबड़ मुकुली पारि था जितेबाला सी कहले जे मु स्पेशल पुलिस मु स्वतंत्र टीम रे काम करे पुलिस विभाग एमान खोलतार करार था वास्तविक एभली कौन व्यक्ति ओडिशा पुलिस रे काम करुछंती कि नहीं जदि काम करुछंती कोउटी करुछंती तांकर आईडी प्रूफ से देखा इच्छा करने उचित थिला कोउटी रहउचंती कोउटी तांकर कर्मक्षेत्र ए सब कथा जदि जानिया को चेष्टा करिथांते तो से ठकामीर शिकार होइथांते। सत सतिका पुलिस को ठकी देले नकली पुलिस ठकामीर शिकार होइचंती पुलिस बाबू पुलिस कर्मचारी माने जहार घटना सामना को आसीची एवं ए पूरा घटना समस्त को चेतई देव एवं जणाई देव जे केही भी ठकामीर शिकार होई पारंती समस्त को सतर्क रहिबाकू पड़िबो। आपन को धन्यवाद जय अधिक सूचना अधिक आलोचना पाई जय महांती आम कटक रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होइथिले अधिक आलोचना करुथिले। परवर्ती प्रसंग को आसीबा विद्यालय रे नाम लेखा बेले आधार बाध्यतामूलक नुहे ये गोटे बड़ खबर कहुए पारे एने सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी लिखिंट विद्यालय एवं गणशिक्षा सचिव अस्वस्थी एस आधार कार्ड नथिले भी छात्र छात्री विद्यालय रे नाम लेखाई पारिबे तेणु नाम लेखा पाई आधार बाध्यतामूलक नुहे बोली स्पष्ट करा जायछि। किछि विद्यालय रे नाम लेखा बेले प्रधान शिक्षक पिलांको आधार बाध्यतामूलक करुथुबा गणशिक्षा विभाग नजर को आसीछि तेणु आधार को बाध्यतामूलक न करिवा पाई गणशिक्षा सचिव निर्देश दैछन्ति परे आधार कार्ड प्रस्तुत करी जमा करि पारिबे छात्र छात्री माने परवर्ती पर्याय रे विद्यालय रे सुरुखुरुरे नाम लेखा पाई ए बाबदरे प्रधान शिक्षक माननकु अवगत करिबाकू सबु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। एथिरे खिलाफ कले ताकू गुरुत्वर सहित निया जीव बोली चिठी रे उल्लेख करा जायछि। तेबे संपर्क में अधिक सूचना पाई मानस विषयी आम ब्रह्मपुर रिपोर्टर जोड़ी होती मानस यही अनेक घटना सामना को आसी थाए जो जगह छात्र छात्री मैंने कहती आमको स्कूल वाला बा आमको स्कूल कर्तृपक्ष आधार कार्ड देखेवाई बाध्य करुँच नाम लेखा टाइम रे से जगह क्या पाखरे कौन विकल्प न थाए जदि क्या पाखरे आधार कार्ड नथिबो संभवतः से आ नाम भी लेखाई पारिबो नाही गोटे बड़ आश्वस्ति कहुए पारे अभिभावक मानक पई जो माने नाम लेखा पई स्कूल को जाउचंती तांकू आ आधार कार्ड पई बाध्यतामूलक बा बाध्य करा जाई परिबो नाही। निश्चय प्रवीण देखु जो भाई पूर्वर
नामलेखा प्रक्रिया विभिन्न विद्यालय जारी रही जेहेतु शिक्षा वर्ष आरंभ हो जाए तथापि विभिन्न विद्यालय नामलेखा प्रक्रिया जारी रही जेहेतु विभिन्न विद्यालय छात्र छात्री मैंने जो मैंने नामलेखा आसुँच से आधार कार्ड बाध्यतामूलक करा किंतु परवर्ती समय आम देखुचु कि विद्यालय आधार कार्ड नथिले से बिना द्वंद्व से नामलेखा प्रक्रिया करदे आम बर्तमान गिरी रोड बालिका प्रशिक्षण विद्यालय रहीचु से शिक्षक मान रही सहित आलोचना करवा कौन कह मैडम पूर्वर किसी नियम थिला जे जो मैंने नामलेखा आसुँच छात्री मैंने आधार कार्ड बाध्यतामूलक करा भी आधार कार्ड आने बाध्य करते किंतु आम स्कूल आम नियम एत कोहल रखी कड़ा नियम रखी नु से कहूँ केमी कर आधार कार्ड आग से ना आम रखीदूँ सब से मागे रख जॉइन तुम पे बाध्यतामूलक करूँ कि तुम आधार कार्ड चेंज कर दियो किंतु आम क्या हारास करनु कौ पिला हारास करनु सम्मति जॉइन कर देखो किसी विद्यालय पूर्वर अभियोग आसाला अभिभावक मान जो रोचे से आधार कार्ड बाध्यतामूलक कराऊला जमा कले ही नामलेखा करा सेमती थिला सरकार नियम आधार कार्ड से अधिक जोर दौले किंतु वर्तमान जो आधार नियम कले से स्वागत योग्य किंतु आम नियम को बाध्य मानिक कहूँ आम जॉइन कर आन तक समय दूसलु बहुत समय दूसलु समय से नहीं भी आसुले केमी आधार कार्ड कर उपाय भी आम पचाई दूसलु किंतु आम कौन से पिला को हारास करनु निश्चय भाव आम प्रतिज्ञा नौले जे क्या भी हारास करा आधार कार्ड परवर्ती समय किभली हम से नहीं उद्यम कराला कौन कहे मैडम जेहेतु सरकार गणशिक्षा विभाग पक्ष गोटे नोटिस जारी कराई तो आम प्रथम आम से बाध्य करूँ आधार कार्ड पर बाध्य करूँ किंतु परवर्ती समय जो आम खबर आसला जे आधार कार्ड बाध्यतामूलक नुहे तापर आम कोहल करदेलु आदि भूल अच्छी से समय पर्याप्त समय आम दौलु जे ठीक करने सचेतन करदेलु कौन पिला को हारास करनु आम किंतु मानस ए वार्ताटी समस्त पाखक पहुंचा जावा उचित कि जो मानक भितर गोटे धारणा थिला जे आधार कार्ड नथिले से माने आउ नाम लेखा पाई जाई परिबे नाही अंततः ये नोटिफिकेशन परे परे समस्ते टिके सचेतन हेबे जानिबा दरकार जे आगामी समय रे छात्र छात्री माने जदि कोनोसी नाम लेखा पाई जाउछंती आधार कार्ड नहेले भी से माने नाम लेखाई परिबे एवं ए दिगरे केवल छात्र छात्री नुहंती कि पेरेंट्स नुहंती स्कूल कर्तृपक्ष मध्य अवगत थिबा दरकार तेज छात्र छात्री केवल नुहंती पेरेंट्स मानक पाई अभिभावक मानक पाई मध्य गोटे बड़ आश्वस्ति कह जाय पारे अनेक जगह छात्र छात्री मानक स्कूल कर्तृपक्ष नाम लेखा बेले आधार कार्ड को बाध्यतामूलक करुथिले किंतु एबे एही नियम रे परिवर्तन करा जायछि कह जाय पारे एवं बाध्यतामूलक आधार कार्ड नुहे बोली गणशिक्षा सचिव निर्देश दैछंती मानस एक भी कहुपे कि अंततः स्कूल कर्तृपक्ष एवं स्पष्ट अच्छी जे क्या आधार कार्ड पर बाध्यतामूलक कर जदि कहीं आधार कार्ड आनी ताकू स्वागत करा जहाँ पाखे न भी थी परवर्ती पर्यायर नियाजिब किंतु नाम लेखा जेमिति हेले हेबो एक को ध्यान दियाजिब जेमिति छात्र छात्री माने हैरान न हेबे। मानस शुणी पार्टी देखो प्रवीण जो भाई पूर्वर हाँ निश्चय प्रवीण देखो जो भाई पूर्वर जो मैंने नामलेखा प्रक्रिया आसुँच विद्यालय को आधार कार्ड देवाई कहला किंतु किसी स्कूल रे बिना आधार कार्ड पिलांकर नाम लेखा हो जाउतला एवं परवर्ती समय से किभली आधार कार्ड तैयारी करि पारिबे एवं आधार कार्ड करि पारिबे से ने उद्यम कराउतला आम सहित शिक्षयित्री रही कौन कह मैडम पूर्वर नाम लेखा जो रही किसी बाध्यतामूलक करा जाउतले आधार कार्ड नहीं आम थिला नियम बाध्यतामूलक आधार कार्ड किंतु मानस गोटे कथा जानिबा कि एमिति केते छात्र छात्री थिले जो माने बिना आधार कार्ड रे आसिकी नाम लेखा पाई एटी अपील करुथिले केते परसेंट छात्र छात्री रहिथिले निश्चय कर तुम करिया न तांगर सब डॉक्यूमेंट पाखे रखुतलु रखला गोटे जानिया चाहू जे केते प्रतिशत पिला जो माने आछन केते जण आधार बिना आधार कार्ड आसी कहउथिले जे हमर नाम लेखा हो हां प्राय
120-30 पिला आमर थिले बिना आधार कार्ड रे ना से नथिला आधार कार्ड आमे तांकर भी रखिछु तांकर भी करिछु तांक कहिछु कि आधार कार्ड बने बिल्कुल तबे से छात्र छात्री मानक पई आ कोनोसी समस्या नाही एबे बिना आधार कार्ड रे भी छात्र छात्री माने नाम लेखाई परिबे एने नोटिफिकेशन सामना को आसीची जहा द्वारा छात्र छात्री एवं खास करके अभिभावक माने गोटे बड़ आश्वस्ति पाइबे छात्र छात्री मानकर ना लेखा समय आपन को अनेक अनेक धन्यवाद मानस अधिक सूचना पई मानस विषय आम ब्रह्मपुर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होइथिले फेल मानुछि द्राविड को रणनीति मैदान रे काम देउना ही राहुल को फॉर्मूला आज भारत वेस्टइंडीज तृतीय T20 मैच श्रृंखला रे तिष्ठी रहिबाकू आजिर मैच रे भारत को जीतिबाकू पड़िबो गत दुईटी मैच रे पराजय परे आजिर मैच भारत पई बेस महत्वपूर्ण प्रथम मैच रे मात्र 4 रन एवं द्वितीय मैच रे 2 विकेट परास्त होइथिला भारत शीर्षक्रम बैटर को खराब प्रदर्शन पई मध्य भाग उपरे चाप पड़ुछि जेतु पई मध्यक्रम बैट्समैन माने मन खोला शॉट खेली पारु नाहंती गत मैच रे तिलक वर्मा लढ़ुआ अर्धशतक जगू भारत सम्मानजनक स्कोर रे पहुंची पारिथिला गत दुईटी जाक मैच रे फेल मारिछंती स्टार बैट्समैन शुभमन गिल तांको बैट टू रन बाहरु नाही T20 स्पेशलिस्ट सूर्यकुमार मध्य विफल हेउछंती शीर्षक्रम बैटर को विफलता भारत पई पराजयर कारण हेउछि एवं वर्तमान गोटे बड़ चिंता आजिर दिन रे आजिर मैच उपरे समस्त नजर रहिछि ए संपर्क में अधिक आलोचना करिया पई आम सहित चिरंजीव पति क्रीड़ा समीक्षक जोड़ी होइछंती चिरंजीव आपन को स्वागत करी ये फॉर्मूलाटी कौन जेमिति आजिर दिन रे मैच पूर्व स्थिति बली बा पूर्व थर भली खेल न देखैब किछि स्ट्रैटेजी रे परिवर्तन करिया को पड़िबो कि द्राविड को देखो स्ट्राटेजी रे बेसी किसी परिवर्तन तो करिया को नहीं जहाँ रिसोर्सेस अच्छी से रिसोर्सेस सहित ही राहुल द्रविड़ और हार्दिक पांड्या को ओह्लाया को पड़िबो खास करके जदि हमें पूर्व दुईटी मैच देखिबा जो T20 भारत एबे T20 को प्रिपेयर होबा पे चेष्टा करछि आ देखुचंदी कि हार्दिक पांड्या नेतृत्व नबार ऑप्शन देखि कि तांकू नेतृत्व दिया होछि एवं जहाँ लागुछि कि आसंता वर्ष जो वेस्ट इंडीज रे जो T20 विश्वकप टी हबो सेठी हार्दिक पांड्या दलर नेतृत्व नेबे रोहित शर्मा की विराट कोहली को देखिया को मिलियो तेणु सेही लाइन रे भारत जाउछि तेणु सेथिरे बेसी किछि परिवर्तन हबार नाही जहाँ भारत मिस करूछि क्वालिटी बोलिंग अटैक रे क्वालिटी मिस करूछि आ सेटा तो फुलफिल हे जो मोस्टली तेणु राहुल द्रविड़ जेमति कहितले कि वेस्ट इंडीज टूर को सेमाने परीक्षामूलक भाव में देखुचंती सेमाने बेसी किछि रिजल्ट आशा करूनांती एठी सब मैच जितिबे बोली सेमति भाबी कि जाय नांती सेमाने देखुचंती कि तांकर जो ऑप्शन रहिछि जेमति एक दिवस रे से एक दिवस वर्ल्ड कप को दृष्टि रखि ऑप्शन खोजुतले सेमति T20 वर्ल्ड कप जोटा आसंता वर्ष हबा को जाउछि ता पूर्व भी भारत बेसी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलु नै तेणु चिरंजीव तिनी क्यारे रिसर्च करा जायतला एवं रिसर्च काम भी कला किंतु T20 रे काहे की काम दउ नाही देखो काम नदबार भी माने बहुत कारण अच्छी वेस्ट इंडीज दिनिकिया दल एत स्ट्रंग नथिला किंतु T20 रे देखिबे तांको टीम रे निकोलस पूरन फेरी आछंती तांको टीम रे ब्रैंडन किंग आछंती तनु T20 एमित्रे भी वेस्ट इंडीज रो जो T20 खेलाड़ी आछंती से माने विश्व सारा सबुठी बुली बुली ग्लोबल लीग T20 कनाडा रे खेलुचंती एबे मेजर लीग क्रिकेट होतला यूएस रे सेठी खेलुचंती बिग बैश रे खेलुचंती तनु वेस्ट इंडीज रो प्लेयर सबुठी आछंती एवं वेस्ट इंडीज T20 रे गोटे पावर हाउस एवं जो माने भी परफॉर्म करूछन निकोलस पूरन परफॉर्म करथिले निकोलस पूरन हमें समस्त जानछु से आईपीएल रे आसी कि भी भारत रो जो क्वालिटी बॉलर एवं विश्वस्तरीय अन्य विश्वस्तरीय क्वालिटी बॉलर मानको विपक्ष रे तांको प्रदर्शन केमति रहि तेणु वेस्ट इंडीज रो T20 टीम एते खराब टीम नुह T20 टीम गोटे स्ट्रांग टीम एवं से माने सेमथि खेलुछन रोकमन पावर किंतु फैन मानको दर्शक मानको भितरे गोटे धारणा चिरंजीव जो टीम वर्ल्ड कप पाई भी क्वालिफाई करि पाला नाही से टीम रु भारत हारिबा को जाउछि देखो से जिन कहते कि एक दिवसीय वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप एक दिवसीय वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करनी वेस्ट इंडीज जो प्लेयर मैंने अच्छे से वनडे फॉर्मेट रे भल खेलुना किंतु जदि आपण कहबे हार्ड हिटिंग विस्फोरक बैटिंग एई सब जिन से T20 रे देखौछन अच्छा चिरंजीव गोटे लाइन रे जयसवाल को एंट्री संभव जयसवाल एंट्री करवा कथा मु सेइथरे निश्चित भाव में एकमत हेबी कि मे बी ईशान किशन को जगह रे जयसवाल हो कि संजू सैमसन को जगह जयसवाल को खेले कि ईशान किशन को 3 नंबर रे किंतु जयसवाल को स्थान निश्चित भाव में से डिजर्व करचंती एवं तांको दबा कथा ओके आपन को अनेक अनेक धन्यवाद चिरंजीव अधिक आलोचना पई चिरंजीव पति क्रीड़ा समीक्षक आम सहित जोड़ी होइतिले समय सरिछि न्यूज कॉरिडोर को एठी रखिबा नमस्कार सह प्रायोजक और लक्ष लक्ष लाइक केवल 15 टंका गोदरेज एक्सपर्ट भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया एवरग्रीन रहो एवरग्रीन मधुकुंज 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 मधुकुंज